नमस्काराः। केन्द्रीयविद्यालयः चेन्नै संभागः प्रस्तौति संस्कृतशिक्षणम्। कक्षा सप्तमी, विषयः संस्कृतं, पाठः द्वितीयः पाठः। पाठ्यपुस्तकस्य नाम रुचिरा द्वितीयो भागः। पाठस्य नाम दुर्बुद्धिः विनश्यति। इदानीं वयं पाठस्य सविवरणं वाचनं पश्यामः। अस्ति मगधदेशे पुल्लोत्पलनामसरः। पश्यन्तु, मगधदेशः। एतत् सरः अस्ति। सरसः नाम पुल्लोत्पलम्। तत्र सङ्कटविकटौ हंसौ निवसतः। सङ्कटः एकः हंसः, विकटः अन्यः हंसः। उभौ अपि तत्र तस्मिन् सरसि निवसतः। पङ्गुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादि मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं द्वाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किमहं करोमि? हंसौ अवदतां, प्रातः यत् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, मैवं तद् यथा अहम् अन्यं ह्रदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम्, आवां किं करवाव? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। हंसौ अवदताम्, अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अवदताम्, सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। हंसौ अवदताम्, आवाभ्यां नीयमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव वस। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः? उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। एवं काष्ठदण्डमध्ये लम्भमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्। पश्चात्
अधावन् अवदन् च हम हो महदाश्चर्यम् हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चिद्वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् यूयं भस्म खादथ। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः पौरैः सह मारितः। अत एवोक्तं सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। यः हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनन्दति सः काष्ठात् भ्रष्टः दुष्टबुद्धिः कूर्मः इव विनश्यति। अस्मिन् पाठे हितकामाः सुहृदाः सन्ति हंसाः, दुर्बुद्धिः अस्ति कूर्मः कच्छपः, अन्यथा कम्बुग्रीवः। भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता। अब हम इस कहानी को हिंदी में देखेंगे। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। वहां संकट और विकट नाम वाले हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। एक बार कुछ मछुआरे वहां आए। वे बोले, हम लोग कल मछलियों और कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ दोनों हंसों से बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस कहने लगे, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कछुआ बोला, नहीं, ऐसा करो जैसा मैं दूसरा तालाब में चला जाऊं। दोनों हंस कहने लगे, हम क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान जाना चाहता हूं। दोनों हंस बोले, यहाँ कौन सा उपाय है? कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपने चोंच से पकड़ लें। मैं उस लकड़ी के टुकड़े के मध्य भाग को पकड़कर तुम दोनों के पक्ष बल से सुख से झाऊंगा। हंस बोले, यह उपाय तो अच्छा है, परंतु एक अपाय भी है। हमारे द्वारा ले जाए हुए तुम्हें देखकर लोग तो कुछ बोलेंगे। अगर तुम उनकी बातों का उत्तर देते हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए
तुम यहीं पर रहो। हंसों की बात सुनकर क्रुद्ध कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः मैं जैसे कहता हूं वैसे करो। इस प्रकार लकड़ी में लटकते हुए कछुआ को लोगों ने देखा। पश्चात दौड़ते हुए बोले, अरे महान आश्चर्य है, हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर ही पकाकर खा लूंगा। दूसरा आदमी बोला, तालाब के किनारे जलाकर खा लूंगा। तीसरा आदमी बोला, घर ले जाकर खाऊंगा। इन सब का वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ। मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर बोलने लगा, तुम सब राख खा लो। उस क्षण ही वह लकड़ी से भूमि पर गिर गया, लोगों के द्वारा मारा गया। कहा है, भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। Let us see the story in English. There was a pond named Pullotpalam in Magadha Desh. In the pond lived two swans named Sangat and Vikat. A tortoise named Kambugriva, friend of the two swans, also lived in the same pond. One day, some fishermen came there and said, we will kill the fishes and tortoises tomorrow. Listening to this, the tortoise told both the swans, friends, did you listen to the fishermen? What shall I do now? Both the swans said, tomorrow morning, whatever is appropriate, we shall do that. Tortoise said, no, do something that I shall go to some other pond. Both the swans said, what shall we do? Tortoise said, I want both of you to help me fly to some other pond. Swan said, how will we do this? Tortoise said, both of you hold a stick with your beaks. I will move happily, holding the center of the stick with the power of your wings. Swan said, this idea is good, but there is a danger also. People may say something looking at you when you fly with us. If you reply, then your death is certain. Therefore, you stay here only. Listening to the words of the swans, angry tortoise said, am I a fool? I will not answer, will not say anything. So, do as I say. Many people started running, seeing the tortoise flying with the swans. One of them said, if the tortoise falls down somehow, I will cook and eat here itself. The other person said, I shall cook and eat near the pond. The third person said, I shall take home and eat. Hearing to all this, the tortoise got angry and forgetting the promise made to his friends, started saying, all of you eat the ashes. Alas, the tortoise fell down and was killed by the people. Therefore, it is said,
One who does not accept the well-wishers' friend's advice perishes like the foolish tortoise that fell down from the stick and died. धन्यवादाः मित्राणि। अहं वेङ्कटेशः चेन्नैनगरे विद्यमाने केन्द्रीयविद्यालये संस्कृतशिक्षकरूपेण कार्यं करोमि। अस्मिन् कठिनसमये मया लघुप्रयासः कृतः। यदि दोषाः सन्ति, त्याज्याः गुणाः सन्ति चेत् स्वीकरणीयाः इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः।